Tonight is the birthday of our fourth Imam, Imam al-Sajjad alayhi salatu wassalam. So we are reciting Hadith al-Qisa, but before Hadith al-Qisa, by your permission, a little bit Quran, then we start inshallah Hadith al-Qisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बराए खुशनूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। صلوات بارہ دیگر صلوات مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، مانگنے والا اور آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا، آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہے عباس، مانگنے والوں کے صلوات۔ ہم تو عباس کے ثناگر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، خاک پائے جناب کنبر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، ان کی مدح سرائی مشکل ہے، ان کے در کی گدائی مشکل ہے، ذکر عباس کی حدیں کیا ہیں، ان حدوں تک رسائی مشکل ہے، وہ سخاوت
का एक समंदर है, हमको मालूम है वफा क्या है। जब सखावत की बात होती है, लब पे गाजी का नाम आता है। वो अलमदार मुर्तजा का पिसर हर मुसीबत में काम आता है। वो सखावत में मिसले दर है, हमको मालूम है वफा क्या है। हम वदलत का नूर रखते हैं, जिंदगी का शऊर रखते हैं। आग ही की ज़कात लेते हैं, हम निजासत को दूर रखते हैं गदागर मगर तमगर हैं, हमको मालूम है वफा क्या है। हश्र के रोज ये कहेंगे नबी, इन मुहिब्बों का एहतराम करो। पुरसदारे हुसैन आए हैं, ऐ फरिश्तो उठो सलाम करो। इनकी ज़ामिल नबी की दुख्तर है, हमको मालूम है वफा क्या है। सलवात। सलावत। ये कौन नज़ी वकार है, भला का शाह सवार है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये गुलशन रसूल का हुसैन एक फूल है। बाप है अबू तुराब और माँ बतूल है। हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन। बाबा है जिसका मुर्तज़ा खैरुन्निसा है माँ, नानी खदीजा नाना है सरकार दो जहां। बाबा है जिसका मुर्तज़ा खैरुन्निसा है माँ, नानी खदीजा नाना है सरकार दो जहां। इस घर की शान लफ्ज़ों में कैसे करूं बयां, इस घर की शान लफ्ज़ों में कैसे करूं बयां। जिसका घराना खैर है मेरा हुसैन है। या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन, या हुसैन मौला हुसैन। मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। सब हुसैनी हुसैन हुसैन कहें, सब हुसैनी हुसैन हुसैन कहें। जब से होश संभाला है माँ ने हमें समझाया है, समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैनी बचपन से।
समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैनी बचपन से, मैं हूँ हुसैनी बचपन से। मौला 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 मैं हूँ हुसैनी बचपन से। नजर करम जो हुर पे हुई उनकी किस्मत जाग उठी। शाह ने जब कुछ फरमाया दिल की काया पलट गई। नजर करम जो हुर पे हुई उनकी किस्मत जाग उठी। शाह ने जब कुछ फरमाया दिल की काया पलट गई। और ये सबको बताते हैं जन्नत ऐसे पाते हैं। सदा लगाई ये रन से मैं हूँ हुसैनी, मैं हूँ हुसैनी, मैं हूँ हुसैनी बचपन से। जब से होश संभाला है माँ ने हमें समझाया है। समझ में आया उस दिन से मैं हूँ हुसैनी बचपन से, मैं हूँ हुसैनी बचपन से। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। अली अली मौला अली, अली अली मौला अली। इल्म का बाब है और शेर खुदा के हैं अली। वो अली जिनको मेरे आका की बेटी है मिली। इल्म का बाब है और शेर खुदा है अली। वो अली जिनको मेरे आका की बेटी है मिली। झूम कर यूं बयां करते हैं जो शाने हैदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। मौला ते मेरा, मौला ते मेरा, पीरां दा पीरे मैं की दसेवा किन्ना अमीरे। तहतुल सरातो अरशे अला तई, तहतुल सिरातो अरशे अला तई, तहतुल सरातो अरशे तई। सारे दसारा और रकबा अली दा पढ़ना कसीदा, ओ पढ़ना कसीदा। हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले। जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, ओ ज़हरा दलाले। जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, ज़हरा दलाले। नेज़े ते चढ़ के कुरान सुड़ाया, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुड़ाया। सबनों पढ़ाया, सबनों पढ़ाया। कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा। हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। हक दे वली दा पढ़ना कसीदा, पढ़ना कसीदा। सारे लगाओ नारा अली दा, नारा अली दा पढ़ना कसीदा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। आखिरी शेर है। मिली है माहे रजब की ये 13वीं तुमसे, मिली है माहे रजब की ये 13वीं तुमसे। ये अहले हक का है त्योहार,
हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। रसूल खुदा का है एक यार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। सलाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा। कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा। नामे अब्बास तो नामे अब्बास तो बख्शिश कहे समाए मेरा। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। दर पे एक बार जो आया कभी खाली न गया। दर पे एक बार जो आया कभी खाली न गया। होके मायूस कभी कोई सवाली न गया। दर खुला रहता है, दर खुला रहता है अब्बास का अता के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। बावफा आपको बीमार मदीना की कसम। हो जो बीमार है कर उन पे जरा नजरे करम। तेरे परचम की हवा, तेरे परचम की हवा चाहिए दुआ के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जब भी कोई गम का एहसास पाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। दुनिया ये तेरी क्या तुझको देगी, किसको दिया है जो तुझको देगी। अपनी मुरादें गाजी से पाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। तेरे सहारे टूट गए क्या, अपने पराए रूठ गए क्या। रूठे हुओं को अपने मनाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ में आओ। जब गम रुलाए, जब दिल हो बोझल, तेरी वफा का ना दे कोई फल। क्या गम है गम को अब भूल जाओ, आओ अलम के साए में आओ, के साए में मेरे अब भी है रहती मेरी सकीना प्यारी भतीजी। जब आओ बच्चों को साथ लाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम। खुश होगी तुमसे मेरी सकीना, गर्मी का जब भी आए महीना। पानी परिंदों को भी पिलाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। ऐ मेरे आका के पुरसदारो, ऐ नोहा खानों मातम गुजारो। जाओ जहाँ भी मजलिस कराओ, आओ अलम के साए में आओ, मेरे अलम पर बीबियों, मेरे अलम पर बीबियों आना। सर को खुदारा अपने छुपाना, सबने सताया तुम न सताओ, आओ अलम के साए में आओ, अलम के साए में आओ। बेटा हूँ मैं भी मुश्किल कुशा का, प्यारा हूँ मैं भी हाजत रवा का। ठोकर लगे जब तब चोट खाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ ये साए में आओ। रेहानो सरवर वो दिन भी आए, गाजी ये कह कर हमको बुलाए, आमीन। रेहानो सरवर वो दिन भी आए, और गाजी ये कह कर हमको बुलाए। हम हैं तुम्हारे तुम गम ना खाओ, आओ अलम के साए में आओ, आओ अलम के साए में आओ। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब्बास नारे हैदरी। अभी आज इधर एक कसीदा भी आपको सुनाएंगे, प्लीज बी सीटेड।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये किबरिया की इनायत है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये अर्शो कुर्सी ओ कौसर ये सलसबील तेरी। ये अर्शो कुर्सी ओ कौसर ये सलसबील तेरी। हुसैन तेरी हुकूमत है, हुसैन तेरी हुकूमत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। फिर अल्लाह जल की सदाओं का शोर है हर सू। फिर अल्लाह जल की सदाओं का शोर है हर सू। हुसैन तेरी जरूरत है, हुसैन तेरी जरूरत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली इबादतों की इबादत हुसैन का मातम। इबादतों की इबादत हुसैन का मातम। ये मेरी माँ की नसीहत है, ये मेरी माँ की नसीहत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने। हुसैन रूह इबादत है, हुसैन रूह इबादत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। ये किबरिया की इनायत है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये दो मिसरे एक और कसीदे के सुन लें। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे
दरवाजे ते लिखिया पंजा 12 दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कराना है हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजाना है खवावा मैं जिथे लंगर खवावा मैं जिथे लंगर कोई ऐसी विथा होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे ज़हूरे मुर्तज़ा मेरा रजब नू मैं मनावांगा माहे शाबान विच हर साल सारा घर सजावांगा आवे नौरोज खुशियां दा आवे नौरोज खुशियां दा मेरे घर विच समा होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे मौला बस आखिरी शेर भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे दुआ पूरी होवे जिस वेले ओ वेला वखा मौला ओ दिन खुर्शीद दी तू जिंदगी दे विच लिया मौला शहीदा दा जिक्र होवे शहीदा दा जिक्र होवे आई ज़ैनब दी मां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमां दी छां होवे बार मुहम्मद वाले मुहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। Assalamu alaikum, everyone. On this auspicious occasion of the Wiladat of Hazrat Abbas alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, and Imam Zainul Abidin alayhi salam as well. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. I'd like to send my felicitations to the household of the Prophet and Allahumma salli ala Muhammad wa ali. And our 12th Imam as well. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Kushali Mubarak to each and every one of you today. Just a couple of quick announcements for our next upcoming programs. Our next program will be Thursday, our Shabe Jumma program, which is our regular Shabe Jumma program. We'll start at 7 o'clock with Isha Salat, and followed by all our Yasin, Dua Komel and that, and the lecture by our resident Alim, Maulana Sayyid Sagir Husayn. And our Friday Jumma program next Friday, which is the 3rd of March, will be at 12:32 the Awal time. It's amazing how the month of Rajab just went by so fast, and we're in the month of Shaban now. And before you know it, Shaban will be over and we'll be in the Ramadan. So we are starting to prepare for our Ramadan programs. This year, again, as last year, we had 30 days at the center here, and everybody was asking again this year, are we doing it 30 days? So we've been contemplating on doing it for all 30 days. As you know, when you put programs like that for 30 days, there's a lot of work that goes into it too as well. So we will want some volunteers to come forward, because it's usually the same volunteers who are always here, and they're out here for 30 days. It's a lot of work. So if we can have some volunteers come forward
for the month of Ramadan and help us out, in any capacity you can, whether you can come here and serve niyaz, or after the program's over, we can clean up and so on and so forth. So if I can humble request to everyone, if anybody can donate anytime, we're not talking about all 30 days, any days you can help, please pitch in and help. I'll encourage our youth to do the same thing too. So this is something that you get accustomed to volunteering as well. I know a lot of... Pardon me? No, you see, we have youngsters here like Ali Abbas and them. No, anybody can volunteer. Yeah, anybody. Yeah, no problem. Anybody can volunteer. So yeah, welcome to do that. And plus, for the youngsters, at grade 9, you'll need a letter of volunteer work. So in order to pass your grade, so if, we can help you with that as well. The other thing that we want is donations for our Ramadan, so sponsorship of niyaz and that. As I had mentioned last time, and I don't think everybody was here, last year's Ramadan, the budget we had put up at around 30,000 for the whole month. And actually the cost came up at 27,000, out of which we had raised 23,000. So we had a shortfall of 4,000, which is not too bad. We have a Jamaat that helps us out, our bigger Jamaat in Toronto, the JCC. So this year too, I encourage people to please come forward, donate for the month. And I'm sure the Maulana will attest to it, that whatever you donate, Allah will give you tenfolds back. So please donate generously towards that for the month of Ramadan, so we can have all 30 days here. So anything we can help us with would be appreciated. So with your loud salawat, I'll ask Maulana to please come up and start the lecture. Can I ask everybody to just move forward a bit, because in case there's more people coming in. Thank you. For Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirin wa mu'in. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Congratulations to all of you on these very auspicious nights, consecutive 3 nights, which coincide with the birth of our 3rd holy Imam, which was yesterday, and today is the other son of Amir al-Mu'mineen, and I mean Hazrat Abbas alayhi salam. And tomorrow, inshallah, is going to coincide with the Wiladat of Hazrat Imam Sayyidul Ibad, Imam Zainul Abidin alayhimus salam. Salli ala Muhammad. So my heartfelt congratulations to all of you. Ahlul Bayt alayhimus salam, especially the master of our time, Imam Sahib al-Asri wa Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajah. Salli ala Muhammad. MashaAllah, a very warm manqabat and a good session of mawaddat of Ahlul Bayt alayhimus salam. And by the way, half of my message
Muhammad Bhai already said it, so I will echo almost the same message in between my majlis, which is about the mawaddat of Ahl Bayt. The ayah I recited is from Surah Mubarakah Maryam, and it's a beauty. It says, Innal ladhina, indeed those people. Two things Allah mentions. Amanu, they have faith. Wa amilu salihat, and they do righteous deeds. So faith plus good deeds. What will happen? Sayaj'alu, Allah will put for them, Allah will make for them or fashion for them. What will Allah bestow to them? Wudda. Allah does not use the word Allah there, puts the other word, other name of Allah, Ar-Rahman, the most beneficent. The most beneficent will bestow love for them, for these who have faith and they do righteous deeds. Allah will bestow their love where? In hearts of people. It's a quite complicated setup. Look, in a brief ayah, inshallah, rather you do righteous deeds after you have faith. So there are mates. Righteous deeds are valuable, which are accompanied with faith. Somebody who is faithless, their good deeds are admired, but they won't have any reward in the hereafter. Allah being just will reward them here in this world, but not in the after, because they didn't believe in Allah. They didn't do those righteous deeds for the qurbatan ilallah part of Islam. So this is the beautiful ayah. I want to connect this ayah to the person who personifies this ayah. And who is he? Tonight mostly I will be speaking about Hazrat Abbas in the English part, and maybe inshallah in the Urdu part I will speak about our fourth holy Imam. Quickly, let me speak a little about Hazrat Abbas alayhi salam. Who is he? First of all, Abbas alayhi salam is not an infallible. This is a little confusing nowadays. Somehow I don't know where this notion came from, but people are questioning, is Hazrat Abbas an Imam? Is he an infallible? Is he a masoom? With due respect, no, he's not masoom, but his actions, he never committed any sin. He's less than that maqam ismat kubra, but he is very and highly honored by Ahl Bayt alayhimus salam. 3 years ago, once I recited that how is the status of Abbas in eyes of Ahl Bayt. Please refer to those majlis, it might be on the internet yet. But Abbas alayhi salam on its own, he is the son to Hazrat Ali alayhi salam, the first Imam. His holy mother is Fatima Kilabiya from Bani Kilab, a tribe who were renowned. They were famous for their courage, their bravery and their valor. Jari hote the wo. And the reason Imam Ali alayhi salam chose Bibi Fatima Kilabiya, Fatima bint Huzam Kilabi to be exact, was the valor. Because of course, everybody wants the most noble family. And you have to be careful, as our Holy Prophet taught us, you have to be careful in choosing your spouse. Because that is the person who is going to produce children for you. Plus, they are going to upbring, they are going to raise and educate them. So as Hadith says, choose pure mothers for your children. Have a salawat on Rasulullah. Hazrat Abbas had a bit taller, he was tall, very strong, and at the same time, he had a very, very beautiful and intelligent looking appearance. So beautiful that people, they gave him the title Qamaru Bani Hashim, the moon of the tribe of Bani Hashim. And from my youth, the Bani Hashim tribe is the same tribe of our dear Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was a Hashimi. Hazrat Abbas, and amazingly Hazrat Ali Akbar. And house of Imam Ali is a strange house. Allow me to say this as it's also relevant for Imam Sajjad. Hazrat Ali Akbar, a bit younger son of Imam Husayn, our third Imam for youth, son of Imam Ali, younger brother to Hazrat Hassan alayhi salam, who is our second holy Imam.
Imam Husayn had two sons. They had three, but two a bit older sons. The eldest, Hazrat Imam Sajjad alayhi salam. Younger than him was Ali Akbar alayhi salam. Ali Akbar, as everybody, they said Ali Akbar was a copy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Imam Zainul Abidin was a true likeness of Imam Ali himself. So look, Imam Husayn's house had the likeness of these two great personalities. And these two, when they used to go out in the market, people used to stop to have a look at them. And many will start saying, tell me, who is more beautiful, Qamar Bani Hashim or the son of Husayn, Ali Akbar alayhi salam? Ya Ali. And let me connect you quickly to a beautiful story which will also unfold that high courageous status. Abbas is the one who described for us the true meaning of loyalty. True. This is maybe his the most outstanding attribute, that he was the most loyal, wafadari. But he was also renowned for his courage and valor, his bravery. Nadar the, bebag the wo. Abbas, the word Abbas in Arabic means a lion. Arabic is a strange language. For different positions of a lion, they have words. Abbas is a position of the lion when it's angry and it's in the attacking mode. And you think of it. I don't know, back days I used to watch many hunting movies on the internet. Of course, the lions. I was amazed one day, you know the lions, they normally work in clans. They have, a whole pack of lionesses and they attack normally, they hunt. Lions normally they eat. There was a huge giraffe and the pack could not take him down. Lion comes and he's kicked by the giraffe. And now he becomes angry. Somehow jumps, grabs the neck of giraffe and finally kills it. So I thought of that position of Abbas alayhi salam, normally saying, see, when it has one paw up in the air, the other on the ground and it's about to jump, it's a heavy animal. Lion is a huge animal. So think of Abbas. Some poet, he said in a poetry beautifully, the word Abbas, the vowels in Arabic, A, O, E, Dhamma, Kasra, Fatha. I teach in my madrasa. Dhamma, Fatha, Kasra. You know what I'm talking about, Zair, Zabar, Pesh. The word Abbas has no Zair on it. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lafz Abbas par Zair nahi hai. Sirf Zabar hai, upar hona. Abbas hamesha istila ki manzil par the. The story I wanted to give you was that on the day of Ashura, go back those days, think it was hot, blazing desert, and Abbas is thirsty for 3 days. And he's not only thirsty, he has so many wounds on his heart, wound of Qasim, wound of departing Ali Akbar, and how brutally, and while they were thirsty and hungry, they were killed in front of Abbas. Abbas was the flag bearer, the commander-in-chief of the army of Imam Husayn. He's watching. Of course, it was the way of jihad, one by one, one-to-one fight. So Abbas finally comes to the ground, battlefield I mean. He had his spears in his hand. And of course was Saj, Dhaj and his Heba. He was like an awe-raising man. When he comes in middle of the ground, he says, who has the courage to face me? Ana Abbas ibn Ali ibn Abi Talib, ghalib ala kulli ghalib. He says, I am the son of Ali, who subdued and defeated his opponent. Who has the courage to face me? Rawayat say, a man with a huge body, taller than Abbas even, almost 1.5 times bigger than Abbas, known as Marid ibn Siddiq. He stepped forward. He looked at Abbas. Apparently he didn't know who Abbas is, because most of the army of Sham, Syria, they knew Abbas from Siffin. They had seen his jihad in Siffin. In Siffin, quickly, I know, I'm a little distracting, but to
to bring you to the page that what was the situation, why the man spoke, which I'm going to report to you what he said to Abbas. In Siffin, Hazrat Abbas was about 13 years of age, but he participated, killed many renowned warriors in there. He was under the command of Imam Husayn alayhi salam in Siffin. In Karbala, he was the commander himself and the flag bearer of Imam Husayn's army. Now he's the last one. Everybody else other than Imam Husayn is martyred. He's the last one. Remember, there was a huge army in front of him. Now one man to so many warriors. Itself, it has so deep psychological impact on a warrior. Especially when you are 30. Look, I spoke for maybe 3 minutes. My lips are dry due to, we have dry weather nowadays. Think of that desert. You are thirsty. You are tired. You didn't have enough sleep. You were always protecting the tents of your master. And Mukhaddarat, Bibi Zainab, Bibi Kulthum, other ladies, alayhinna salamullah. Now think of the man. He's thirsty, tired. Now he comes and wants to fight a man almost twice of his size and very expert warrior. Ibn Siddiq was a renowned and he was a Najib. He was a noble man. Yeah, misled, joined the army of Yazid. He comes in front of Abbas. Now you know the setup, that why he said so. He looks at Abbas and he's amazed by the appearance of Abbas alayhi salam. He says, oh young man. Hazrat Abbas was about 32 years of age at that time. Marid ibn Siddiq was around 48 years of age. And Arab, they used to take a 40 years man as a grown-up man. 30, 25, they were like a bit youth to them. He looks at Abbas and he says, look, you are such an angelic looking young man. I'm amazed. You look so intelligent. Go away. Don't face me. I'm going to kill you. I don't like to kill such a nice looking youth. And then he recites, Arabic poetry. Or Rajaz padhe usne kuch. Ke be known, who am I? Abbas replied him only with one thing. It's a lengthy sentence, but I'll just choose 2 keywords. Imam says, Hazrat Abbas said, I heard your eloquent poetry and you are good at it. Allahu Akbar. This is adl. When somebody is good, acknowledge you are good. But you don't know, looks like you don't know who am I. I am a branch of the tree of prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. मैं शाख नबुव्वत का फर्द हूँ. I am the heir of the valor and courage of my father Ali ibn Abi Talib. Looks like you don't know me. Hazrat Abbas says that get ready. Now Maqtal says Hazrat Abbas jumped from his place and he grabbed the head of his spear. He was holding a long spear in his hand. Abbas holds his spear with one hand and the other hand with the spear. He strikes him with his own spear and kills him. The reason I'm reporting you this is Hazrat Abbas was thirsty for 3 days. Think of an Abbas who is not thirsty, who is not hungry, who is not psychologically under lots of pressure of seeing all his own raised children dying in the plains of Karbala. And most importantly, if he had the permission of his master Husayn. Maybe I could not communicate. अगर अब्बास को फ़कत एक चीज़ अता हो जाती कि हुसैन उसे इजाज़त दे देते कि अब्बास पानी नहीं, इन सब के सर चाहिए. The whole situation might have turned upside down. This is Abbas ibn Ali alayhi salam. Mere salawat alayhi. Muhammad. The reason I chose this beautiful ayah is the 2 attributes. Please pay attention. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Salihat is the plural of salih. Righteous deed. Allah will bestow their love in the hearts of people. If we are righteous and if we are faithful, Allah will make people love us. Having that in mind, look how Imam Sadiq alayhi salam teaches us
and tells us the high status of Hazrat Abbas. Imam Sadiq says, when you want to recite salam onto my grandfather Abbas, say this way: Assalamu alayka ayyuhal abdu salihu. Salutation to be you, peace be to you, salam be to you, oh my, who? Al-abd means servant, somebody who serves Allah. Salih means righteous, with alif lam, indefinite, the righteous. What does that mean? Let me mention you another point to make this clear. In salah, how do we finish our salah? 2 points I want to mention. Sami'a Allahu liman hamidah. Every time we want to raise, we want to recite this sentence. What does this mean? May Allah accept the du'as of whoever are praising Allah. Meaning I'm making dua when I'm offering my salah. Oh Allah, listen to the dua of everybody who is praising you, who is saying your hamd. Sami'a Allahu, may Allah listen to the invocation of whoever hamidah praises him, and he praises Allah. Okay, how do we finish salah? Assalamu alayka ya Rasulallah, number 1. Salam number 2. Assalamu alaykum. Recite it. Assalamu ala ibadillahi salihin. May Allah's salam be on the righteous men of Allah Jalla Shanu. When every salah you recite from now on, think of Hazrat Abbas, that I'm going to include Hazrat Abbas in my salam. This is the sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, that Allah will bestow, Allah will throw the love of these righteous people in the hearts of my creation. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The second and last point about Hazrat Abbas I want to mention is the importance of a flag bearer. You know, in the old days and even today, nowadays normally it's the general, but old days, because people, they had to watch physically their commander. Sometimes the commander was the same man as the flag bearer. Sometimes it was different. Flag bearer was a different man. Commander was a bit different man. Imam Ali had the strange attribute. He was ever the commander of the army of Rasulullah and the flag bearer at the same time. And this flag made a symbolic appearance in Islam in the Ghazwa of Khaybar. Khaybar was the Ghazwa which was fought against Jews back those days. We all know the story of Khaybar. It was a hard fortress known as Qamus. Their commander-in-chief was known as Marhab. Marhab was a really tough guy. For 39 days, Muslim army's commanders, they went, were defeated, and came back. They were unsuccessful. Now, there was a little, disappointment in the army of Islam. So now the Apostle of Allah, he promised them that tomorrow, لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا. Rayat means the flag, alam. Tomorrow I'm going to give the alam, the flag, to such a man who is a rajulan. He is a man. If I can say, Sahi mard hoga. Ya Rasulallah, what else? Karraran. He is going to attack again and again until he wins. This is what karar means. Karar yani jo her phir ke hamla karne wala ho. Ghaira farrarin. He will not be from the runners. He won't run away from the battlefield. Jihad se farar nahi karega. Yuhibbullaha wa rasulahu. This is maybe the most magnificent attribute of Imam Ali. He loves God and the Apostle of God. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. And God and God's Apostle, God's Messenger, they also both love Him. So the connection is 100%. ऐसा नहीं है 50% के हम तो प्यार करते हैं वो नहीं करते. Both sides, they love one another. And now tomorrow, let me just mention you a point. Tomorrow when people are waiting Rasulullah to come out of his tent, now let's see whom he gives the flag. And apparently Imam Ali is not in the battlefield. He was in Medina. And there are people, go and read the history, Ghazwa Khaybar, nowadays it's available online. People, they were like leaning against the sacred body of Rasulullah to make him aware that, Ya Rasulullah, I'm here, give me the flag.
Ya Ali. You think it is with touching and rubbing your body with Rasulullah's holy body? You think the flag will come this way? Some people, they said, I was like, standing on my feet higher and higher to like, Ya Rasulullah, I'm here, look at me, I'm here. Maybe I'm going to get the flag. Rasulullah came out with a flag which had white color. That day, Rasulullah used different colors. But that day in Khaybar, he had a white flag. He kind of, brandished the flag. And he said, Aina Ali ibn Abi Talib. Where is Ali? Everybody, it was a shock. Oh, Ali is not here. Good news. He's not here. He's sick. He has problem with his eyes. Call him. Imam Ali came. I just want to mention this point. Because everybody was desperately waiting for the alam, for this flag to be given to him. So it was really symbolic that day Rasulullah raised his holy hand, flag was a bit long, and he gives it to Imam Ali like this, take it Ali. And Imam Ali takes it. Now this was the flag inherited by Hazrat Abbas alayhi salam. Imam Husayn got this flag from Baba and gave it to Abbas and made him his alam bardar. Have a salawat on him. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. तो अगर मैं इस नुक्ते को फॉलो अप उर्दू में आपको खुलासा करना चाहूँ तो वो ये था, खैबर में अली मुर्तज़ा को जनाब रसालत माब ने अलम दिया। जिनको मौला अली को अलम देने का अमल पसंद आया, अच्छा लगा, वो आज भी अलम को चूमते हैं। और जिनको अलम नहीं मिला, आपने कह दिया सलवात एक पढ़ी है। जुमला कहां जे किधरे उन्होंने लभ जाता, एक सलवात पढ़ी है। अब्बास का अलम मौला अली वाला अलम था। ये अब्बास अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कि अब्बास वो हस्ती है, खुदा की कसम मौजज़ा है ये अब्बास की मोहब्बत का, कि अल्लाह ने जो उनकी मोहब्बत उनके बदतरीन दुश्मन के दिल में भी डाली कि वो इकरार किए बिना ना रह सका। कौन है भला वो दुश्मन अब्बास का? यजीद इब्ने मुआविया। जब ये तबर्रुकात लुटे हुए करबला के गज़वे के बाद जब शाम में यजीद के पास पहुँचे, पुराना तरीक़ाकार यही रहता था, उसने देखी चीज़ें, उसने अलम देखा, कहा इस अलम को उठाकर ज़रा बुलंद करो। अलम उठाया, बड़े गौर से देखता रहा, परेशान हो गया। कमांडरों ने, लोगों ने पूछा, अमीर क्या बात है, आप बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या खास है? भाई अलम है बस। कहने लगा इसका अलम बरदार कौन है, इसको उठाने वाला, बरदार ये उठाने वाला, फ्लैग बियर, इसका अलम बरदार कौन था? कहा हुसैन का भाई, अली का छोटा बेटा अब्बास। कहा तुमने इस अब्बास को मारा कैसे? लोगों ने कहा अमीर क्यों पूछते हो, तवज्जो कीजिएगा, मौला के मसाइब नहीं पढ़ना चाह रहा, मौला की देखिए फजीलत क्या है। पुराने अरब के लोग इन नुकात को जानते थे। उसने कहा कि लगता है कि ये बेमिसल शुजा है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इस अलम के ऊपर जो कपड़ा है, कपड़े में तीरों के सुराख हैं, जो उसके अंदर लकड़ी का हिस्सा है उसमें तीर लगे हैं, जगह जगह पर कट्स हैं, उसके क्रैक्स हैं, लेकिन वो जो एक ख़ास जगह होती है ना जिसको हम दस्ता कहते हैं, दी हैंडल टू होल्ड दी अलम, वो बिल्कुल सही और सालिम है। दिस टेल्स मी फॉर माई यूथ कि इस जवान ने इस मजबूती से अलम को पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ पर तीर लगे, नेज़े लगे, पत्थर लगे, उसका हाथ छिद गया होगा लेकिन उसने अलम को नहीं छोड़ा। एक सलवात पढ़िए अब्बास की शुजाअत पर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ो, अब्बास की वो शान है कि इसके लिए मौला सज्जाद का लंबा खुतबा है पूरा, अजीब जुमले हैं। दो लफ्ज़ दूंगा आपको मासूम के एक गैर मासूम के बारे में कि अम्मुना अब्बास काना अम्मुना अब्बास। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये भी हिस्सा है।
इमाम की हदीस है ये, कहा ना अम्मुना अब्बास, हमारे चचा अब्बास जो थे, नाफिजुल बसीरा नंबर 1, दूसरा सुलबल ईमान। हमारा नाफिजुल बसीरा पता है क्या माना है? उर्दू में कहूँगा, जवानों को समझ नहीं आएगी। somebody who has a penetrating acuteness, penetrating ability to decide and pick what is right from the batil in a second. है नाफिजुल बसीरा, very intelligent person with lots of discernment. और सुल्ब अल ईमान, सुल्ब means something really firm, solid, unshakable ईमान। हजरत अब्बास का ईमान क्यों इतना हजरत सज्जाद भी इस पर करते हैं फख्र। हजरत अब्बास को एक मकाम पर उनके कबीले वाला था शिम्र, वो भी किलाब का था, बनी किलाब का। उसने आकर कहा अब्बास आपको पनाह है, आपकी जान महफूज है। उसने कहा और फर्जंद रसूल? कहा नहीं, हुसैन को पनाह नहीं है। कहा खुदा लानत करे तेरी इस पनाह पर कि जिसमें फर्जंद रसूल को पनाह नहीं। देखिए ये ईमान की बात है। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे आगे 30,000 का लश्कर हो और हमें पता हो अब मर्ग हतमी है, और हमें आकर कोई नवीद दे, खुशखबरी दे कि भाई तुम्हें छोड़ देंगे, तुम महफूज हो, तुम्हें अमान है, और हम कहे कि नहीं, मेरे इमाम ज़मान को जब तक अमान नहीं है मैं तुमको अमान नहीं दूंगा। ये है हमारा आज का मैसेज कि हमें आमाले साले और हमें अल्लाह पर इस तरह का ईमान चाहिए कि जो ईमान हज़रत अब्बास का है। मैं इमाम सज्जाद के हवाला से अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो तो मासूम है, मासूम तो हुज्जत खुदा होता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा नमूना शायद हज़रत अब्बास की ज़ात है कि 30 दिन की प्यास, 3 दिन की प्यास और 3 दिन की भूख, एक मकाम पर इस शुजा ने दरिया पर कब्जा कर लिया। खुदा की कसम, मश्क को भरा, मशकीज़ा भर के अब्बास ने हाथों में पानी को उठाया, साथ में लश्कर को देखा। अली के बेटे ने वो काम किया कि कायनात में कोई कर नहीं सका। अब्बास ने दोनों हाथों से पानी को नीचे दरिया में गिराया। या अब्बास आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हमें? पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि देखो पानी मेरे इख्तियार में है, मेरा नफ्स भी पानी पीना चाहता है, लेकिन मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया था कि अब्बास पानी लेकर आना, और मेरा अखलाक गवारा नहीं करता। मेरे बाबा ने भी वसीयत की थी कि अब्बास एक दिन आएगा तो मेरी शुजाअत का वारिस है वालदी, कि जब तुम मशरे में दाखिल हो, ला तशरबिल मा अबाखू कल हुसैन अत्शानुन, पानी मत पी लेना अब्बास जबकि तेरा भाई हुसैन प्यासा हो। आया खुदा की कसम, हमने अब्बास से ये अखलाक सीखा है कि हमारे पास वी कैन प्रोसीड विद एनीथिंग वी वांट टू डू। क्या हमने सेकंड थॉट दिया, आया मेरा अल्लाह ये पसंद करता है मैं ये काम करूं या नहीं? आया मेरे इमाम ज़मान को ये काम पसंद है कि मैं ये करूं या नहीं? शायद लाइफ चेंजिंग मैसेज आज जो मैं आपको दे सकता हूं वो यही है कि हमें बेशुमार औकात में, इस कंट्री में स्पेशली, और आजकल वी हैव काउंटलेस ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। I'm about to finish, I'm gonna take longer। मुख्तसर ही पढ़ूंगा, आपको कसीदे की शक्ल में सुना दिया कुछ जिक्र। एक सलवात पढ़िए। अब्बास का पैगाम अगर हम लेना चाहें वो तो ये है कि मेरे भाई यहाँ पर इतनी नामात हमारे कंट्रोल में हैं। Many things we have on our fingertips nowadays. This even makes harder. Don't think कि ये हमारे लिए सहूलत है ना, it makes our test harder. Think of you're in front of your TV screen, you're alone at home. For youth, for others maybe. What you watch, be careful because you are under watch. Allah is also watching you. Imam Zaman is watching you every night. Imam watches our book of deeds. He goes through everything. Imam himself says in a written hadith, when I see my followers doing righteous deeds, I pay thanks to Allah. Praise Allah that I have such nice, obedient, and righteous deeds doing followers, doers of good deeds. And if I see them making mistakes, sometimes I cry. क्या हम इमाम ज़मान को रुलाने वाले काम करना चाहते हैं जिससे वो रोएं खुदा ना खास्ता, या ऐसे काम के जिससे वो मसरूर हों, जिससे वो खुश हों? My dear youth, be watchful how you speak, especially with your parents, your elders, how you behave with your siblings,
how you behave in your class. You should have that outstanding akhlaq that your roommates, your classmates, your other fellows, your colleagues, wherever you are, they should question you. Man, you are something special, bro. Where did you get this from? Who are you? How can I be like you? I mean, they should be attracted. Your deeds should be speaking louder than your words. Don't say it. Rather, do it in such a way that they come and ask you कि तुम किसके पैरोकार हो भाई? तुम्हारा राहबर व हादी कौन है? ये अच्छा अखलाक तुमने कहाँ से सीखा है? And lastly, as Brother Muhammad mentioned, please allow me to say that in English. MashaAllah, we had extraordinary attendance last year during the holy month of Ramadan. It's about to kickstart. And it's a huge challenge for any Jamaat. How to execute your plans, how to serve our dear and near community members the best way we can. Team members and few volunteers, they can't do it. We all know. Look at the big hotels, to be very low in my example. How many staff they have and how much training they get. Is it not the barakah of Abi Abdullah al-Husayn here? We don't get any special training to be a volunteer, but look how we run our programs so smoothly. But we need your help. Please step forward. And Brother Jalis was asking age. You are in, Jalis bhai. No worries. You are in. You qualify. Everybody, whatever you are good at, even rolling out the food carpets, the paper towels, cleaning, helping, even arranging shoes. Whatever you want to do, I swear by Allah, काश ये मैं अमामा ना पहना हूँ. अब you will see, मेरे साथियों से पूछिए, no self praise. Normally I used to be the first one to enter. Al-Mahdi में मैं जाता था जब मैं छोटा था. 18.5 years at age. I came once, first time in 1991. I was 18.5. Ask Maulana Bakri Sahab, Zaki Bakri Hafidahullah. I will be normally the last to leave. Normally I'm still the last. Muhammad Bhai beats me with that. He is normally the last to leave. But आज आपके बच्चों को you heard the love, you heard the मुबद्दत message. We had the, आज मैंने भी कसीदा भी पढ़ा, 2 पढ़े आपकी खिदमत में, ठीक है. But listen, we need flag bearers. मैं अभी now, let me give my secret. I'm 50 now. Yeah, I'm 50. I'm not going to survive long. I'm not going to stay here for long. Someone else must come and take my place. But do we have enough educated people? In you, let's say, Muhammad Bhai is working. May Allah give him long, lengthy, healthy life until the Dhuhur of Imam Zaman. But how long are we going to stay? Our future generation is the one who has to take the control. They are the next. You are the future leaders. We have to invest in you. And how? The first step is to volunteer in your center. Know the problems of your center. Know how to run, how to conduct the day-to-day issues and tasks in a center. And donations, of course, 100%. May Allah reward you. Sometimes, forgive me, I don't mention your good feedbacks because I don't want to be boasting. Oh, mujhe bahut achhe comments and feedbacks mili hai. I love you. I thank you so much. Everybody who has sent me your great feedbacks always. And I respect and honor. And I have always tried to reflect whatever negative feedback or completion points you gave me in my speech, in my behavior, everywhere. But I would beg you, all of you, please participate in MAX in any capacity you can. Fill in the gaps. Donate as much as you can within your limits. The most precious thing is our integrity. To keep our community healthy, keep our programs running smooth, we need your help. I do lots of du'as for all of you. And may Allah accept all of your amal. May Allah reward you. May Allah give you good health, give your parents good health. May Allah forgive those who were with us in the previous and now they are in the mercy of Hazrat Abbas alayhi salam. May Allah put them in the highest status near Rahmat-e Jabari Hazrat Abbas alayhi salam. And may Allah, for the sake of Bimar Karbala, Imam Sayyidul Sajideen alayhi salam, give speedy recovery to all those who need our du'as. Especially, we have few very near community members. Our dear Panju family, they are suffering. May Allah give them speedy and complete recovery and cure them ASAP. And may Allah count us all among the true lovers and followers of Imam Zaman. And for the sake of his great-grandfather Abbas and Imam Sajjad, may Imam's holy heart be happy with us. Rabbana taqabbal minna
इन्नका अंतस समीउल अलीम मा ज़िक्र सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती खल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुआफाई वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या मुगीज़ शियाति वज़्ज़वारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नफ़, अस्सलामु अलैका कुन शफ़ीअना व शफ़ीअ वालिदैन फ़ी यौमिल जज़ा, सलावातुल्लाहि अलैका व अला आबाइका सबअ व अबनाइका अल-अर्बअ व उख्तिका फ़ातिमतल मासूमा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मानी व शैतान। अस्सलामु अलैका या शरीक़ल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वस्सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन अंसारिका व अवानिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यका अल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि सा व फ़ी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा Muhammad wa'ajjil farajahum. One of the titles of Abbas alayhi salam is Babul Hawaij, door to your wishes and desires. Let's call upon Allah with the ayah of His Qarar for the speedy recovery of all the Mareed, especially our dear Panju family, our brothers. I don't want to mention their names because they told me not to mention. And for the acceptance of our amal and hastening in the reappearance of our master of the time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And let's finish tonight's program with a gift of Surah Mubarakah Fatiha for kul mu'mineen and mu'minat, marhumeen and marhumat, especially our parents and especially our volunteers in the past and the greater community, and especially those who ever loved and followed and helped the cause of Ahl Bayt alayhimus salam ma dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.